Hello, my dear students. Once again, welcome back MS-CIT ERA सेशन नंबर 33 में। अब हम देखेंगे सेशन नंबर 33 नॉलेज चेक टेस्ट 1 के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तो एक बात ध्यान से सुनिए या फिर गौर करके देखिए कि सेशन नंबर 30 से हमारा पावर पॉइंट जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर ये क्वेश्चन आंसर की शीट्स चल रही है। तो उसमें से सेशन नंबर 33 है। तो उसका सेशन नंबर 33 नॉलेज चेक टेस्ट 1 के बारे में हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, यू आर अप्लाइंग एनिमेशन टू पिक्चर in your presentation. Which of the following is not available while animating a pictures? इसका आंसर है बी, before previous. Next question, what are animation effects used for? तो इसका आंसर है सी, animate the text or pictures. Next question, question number 3, PowerPoint does not allow you to enhance a pre-designed animation effect after it is applied to a picture or text. इसका आंसर है बी, false. Next question, in PowerPoint animation effects can only be applied to shapes. इसका आंसर है बी, false. सेशन नंबर 33 नॉलेज चेक टेस्ट 2 के क्वेश्चन आंसर्स। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, टू डैश इनटू द एड्रेस बार ऑफ योर ब्राउजर टू एक्सप्लोरर templates in the online version of Microsoft Office. इसका आंसर है सी, office.com. Next question, press the key on your keyboard to exit the full screen mode. इसका आंसर है बी, escape. Next question, question number 3, click on the dash icon to explore PowerPoint templates in the online version of Microsoft Office. इसका आंसर है सी, OneDrive. Next question, you have created a quiz game in the online version of Microsoft PowerPoint. You will be, you will click to view the quiz in the full screen mode. इसका आंसर है बी, प्रेजेंट. सेशन नंबर 33 नॉलेज चेक टेस्ट 3 अबाउट लूमा एआई ड्रीम मशीन एआई टूल के ऊपर क्वेश्चन आंसर है। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन है, हाउ डज लूमा एआई ड्रीम मशीन जनरेट इमेज? इसका आंसर है बी, बाय यूजिंग टेक्स्ट prompts to create. Next, सेशन नंबर 33 नॉलेज चेक 4, UDIO AI टूल अबाउट उसके ऊपर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज UDIO audio allow users to do? इसका आंसर है बी, जनरेट सॉन्ग्स फ्रॉम टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स. क्वेश्चन नंबर 2, which feature of UDIO is best represented by this image? आंसर है ए, टेक्स्ट टू म्यूजिक जनरेशन. सेशन नंबर 33 सेल पाथ लर्निंग, एक टॉपिक पे इसके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। तो टॉपिक है एनिमेशन टैब एंड क्विज गेम शो। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू अप्लाई एनिमेशन स्टाइल टू योर पिक्चर्स? इसका आंसर है ए, क्लिक ऑन एनिमेशन स्टाइल, सिलेक्ट द डिजायर्ड स्टाइल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिक ऑन डैश सर्च रेडी टेम्पलेट्स, फाइल में होते हैं। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट वाला टेस्ट है, उसको बोलते हैं सेशन कंप्लीशन टेस्ट, सेशन नंबर 33 का सेशन कंप्लीशन टेस्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट whether the following statement is true or false. ये ट्रेडिशनल एचडीडी has no moving parts so it does not get damaged easily. इसका आंसर है बी, false. नेक्स्ट क्वेश्चन, why would a student prefer a flash memory card instead of an optical disc? इसका आंसर है, मतलब इसमें नीचे आंसर्स दिए हैं,
दो दो आंसर्स है इसमें। जैसे कि राउंडेड वाला होता है तो एक ही आंसर होता है। अभी यहाँ पर चेक बॉक्स वाले टिक मार्क के ऑप्शंस मतलब इमेजेस आई है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर चेक बॉक्स दो पे क्लिक करना है। वन इज ए एंड सेकेंड इज बी का आंसर है इसका, मतलब ए एंड बी दो आंसर है, दो आंसर को टिक करना है। टू यूज टू मोबाइल्स एंड कैमरास, एंड बी वाला है टू स्टोर डाटा इन अ रीराइटेबल एंड लाइट वेट फॉर्मेट। नेक्स्ट एज इट इज इसी तरह अभी क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, which statements correctly describe on optical disc? Select any two answers, B and C आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, Rahul wants to improve the overall performance of his computer system. Which of the following actions will help him? Select any two answers है इसका, B वाला आंसर है एंड D वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, which of the following statements correctly explain why an SSD performs better than an HDD? Select any two answers इसका A and C आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a photographer needs to store hundreds of photos inside his digital cameras. He needs a device that is lightweight, fits inside the camera slots, and is rewritable. Which storage medium should he use? इसका आंसर ये फ्लैश मेमोरी कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Arjun needs to small device that fits in his pocket and helps him transfer files easily by connecting to a port. Which device should he use? इसका आंसर है डी, USB drive, pen drive. Mr. Sharma's computer has become very slow while opening files. Her son tells her that her files are scattered across the drive. What maintenance task should she perform to organize the data and improve speed? इसका आंसर है सी, perform regular deprogramation. Next question. Priya is buying a traditional hard disk for her desktop. She wants the data to be read and written very quickly. Based on this, each specification should she check for faster speeds? इसका आंसर है डी, check for higher RPM। RPM का फुल फॉर्म है rotations per minutes. Next and last question. Amit's old laptop takes 5 minutes to start boot up, which annoys him. He wants his laptop to start within seconds, just like his smartphone. Considering this, which upgrade should he choose? इसका आंसर है भी, replace the HDD with a solid state drive, SSD. सो इस तरह से सेशन नंबर 33 में हमने सेशन कंप्लीशन टेस्ट, नॉलेज सेल्फ पाथ लर्निंग टेस्ट एंड नॉलेज चेक टेस्ट एंड अबाउट एआई टूल के ऊपर नॉलेज टेस्ट थे वो हमने देखे। उसके क्वेश्चंस आंसर्स हमने ये देखे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखकर आप अपने मार्क्स माइनस ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखकर सॉल्व करो। तो रुकते हैं यहाँ पर, तब तक जब तक के लिए बाय बाय।